Dr. Chauhan, distinguished friends at the dais, Baba Seva Singh ji, of course, faculty, students, ladies and gentlemen, I am delighted to be here on such a pleasant occasion. I was aware about your university because you cannot be unaware about it, reading, seeing in the press, in Delhi, everywhere, Amity, Amity, Amity University. But this is the first time, I have come, and the occasion is Baba Seva Singh. I have my own view of faith and holy people, but Baba Seva Singh is one person. From the time I saw something close up and made up my own mind, I truly admire. When I was Chief Election Commissioner of India, he asked me to come to his little college on the Beas River, Khadur Sahib. It's a village. It's a focal point of Sikh history, and it's a pleasant place on the Beas River to go and do a little convocation for his college students. I've never gone around and done university or any convocations most of my life. But this one I said, I think I better go. Because I come from a village, I think most of us do. Some of us forget the village, but I don't. It stayed with me and it will stay with me till the end. What Muhammad Ali said once, never look down on those who look up to you. So I am from a little village, from a little family, average India, but really worthwhile India. And therefore I thought, here in this border area, I know what all they suffer from. Independence has given them all sorts of problems which a border does get. A couple of wars also. And if he is doing something for education, not building more and more gurdwaras. I have said sometimes in the Punjab, because I think I can say it bluntly and brutally, to all the sants, संतों के नाम बहुत होते हैं, कि भाई संत लोगों आप गुरुद्वारे बनाने बंद कर दो, बहुत बन गए, बहुत मार्बल लग गई, तो अब आप लोग विद्या का करो, एजुकेशन का करो, कोई लोक सेवा करो, कोई जनता सेवा करो. जो बाबा नानक तो यही कहते गए जितनी मेरे को थोड़ी बहुत समझ है. तो मैंने कहा आपको दिल्ली में कोई मेडल दे या ना दे, बाबा जी को तो मिला है, क्योंकि हिंद सरकार ने पहचाना कि बाबा जी की क्या कदर है और कदर करनी चाहिए. लेकिन मैंने कहा अगर दिल्ली वाले नाम ही दें तो मैं आपको एक खिताब दूंगा, और वो दूंगा विद्या रतन. तो आप स्कूल बनाओ. सारे गांव के स्कूल खत्म हो गए हैं, हमारे पंजाब के भी खत्म हो गए, स्कूलों का बुरा हाल है, गांव के स्कूल बिल्कुल खत्म हैं. तो मैं वहां कह देता हूं कि तुम्हारे लड़के लड़कियां बल तो पढ़ ही नहीं सकते. अगर आप कहोगे भी कि ये कर गया किसी की मैट्रिक या बीए या +2, तो आप दिल्ली में ड्राइवर नहीं लग सकते हो. ये हाल है हमारा पंजाब में, क्योंकि यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी सिचुएशंस एमए पास मुकाबला करेंगे तो आप कहाँ आएंगे. आपकी पढ़ाई भी शायद झूठी है, नाम तो लिख नहीं सकते और मैट्रिक कर ली है. तो मुझे इसलिए खुशी हुई, तो मैंने कहा मैं आपके आऊँगा. तो मैं गया, मैंने इनका वो कॉलेज देखा. तब से लेके मैंने इनके साथ अपने आप को थोड़ा जोड़ा हुआ है, और इनके रास्ते मैंने बहुत कोशिश करी है कि एजुकेशन के काम को बढ़ावा दूं. इस वक्त ये 300 लड़की का हॉस्टल बना रहे हैं. मैंने तरनतारन में, मेरा गांव तरनतार से 1 किलोमीटर पे है, तो तरनतारन में मैंने हर एक एमपी को 2 करोड़ मिलते हैं साल के. तो 6 साल के मेरे को 12 करोड़ राज्यसभा में मिले. और ये चर्चा भी हिंदुस्तान के अखबारों में होता है, टीवी पे होता है, ठीक ही होता है कि भाई ये 800 एमपी हैं तो 2 करोड़ साल के लेके 1600 करोड़ हमको मिलता है. तो ये क्या करते हैं, ये उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. बहुत लोग टिप्पणी भी करते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा भी करते हैं. मुझे तजर्बा उधर का भी है, इधर का भी है, मैं लंबी कहानी में नहीं जाना है. लेकिन फिर भी टिप्पणी होगी, लोग देखेंगे, डेमोक्रेसी है और देखना चाहिए.
तो मैंने सारा जोर वहाँ एजुकेशन के ऊपर लगाया, गाँव के, और अबव ऑल लड़कियों के। लड़की पढ़ गई तो जगत पढ़ गया, खानदान पढ़ गया। तो मैंने वहाँ 200 लड़की का हॉस्टल बनाया। इनको मैंने कहा कि भाई आप एक हॉस्टल बनाओ, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाके में कुछ नहीं है। अगर लड़की कोई कच्ची मैट्रिक या +2 कर भी जाएगी तो वो कॉलेज नहीं कर सकती। एक कच्चा सा कॉलेज तरन तारण में है, जिसको अब हमने डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो वहाँ तभी करेगी अगर वहाँ कमरा मिलेगा रहने को, जो उसके माँ बाप कहेंगे ये लड़की हमारी सुरक्षित है, यही होगा ना। तो नहीं है। तो मैंने वहाँ 200 लड़की का हॉस्टल बनाया और चलाया, और मुझे उसका बड़ा फख्र है। मैंने इनसे कहा, ये कहते हैं मैं 300 का बनाता हूँ। तो मैंने सोचा 300 और 200 500 लड़की के हॉस्टल 10 मील के फासले में खडूर साहब और तरन तारण में है। तो ये सारा बॉर्डर के गांव जो हैं, वो माँ बाप जो हैं लड़की को भेज के कम से कम BA तो जैसी भी हम दे रहे हैं वो कर लेगी, तो कोई दाल रोटी का सवाल होगा। लड़कियों को और भी बड़े सवाल उठते हैं शादी के बाद। तो ये बना रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो 2 मंजिल तो मैं इनॉग्रेट कर आया हूं। अब इनको मैं रोज जोर देता हूं कि जल्दी से तीसरी छत डालो। ये काम करते हैं। इसलिए मेरा इनमें सच्ची बात है रुझान है, आकर्षित हूं। और दूसरा काम एजुकेशन का करते हैं। दूसरा काम इन्होंने कहा एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, जो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करा। मेरी स्पीच तो इन्होंने फेल कर दी, सब कुछ ही कह गया, अब मैं क्या कहूं। एनवायरनमेंट, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं वहां का हूं, जाता रहता हूं, सारी उम्र जाता रहा हूं। मैं पंजाब का IAS हूं, 40 साल एक एक गांव घूमा है। मुझे गांव में बहुत इंटरेस्ट है, रूरल पंजाब में या इंडिया में। तो मैंने देखा कि सैकड़ों किलोमीटर इन्होंने खुद जाके दरख्त लगाए, उसको ट्री गार्ड लगाया, उसको वाटर बाउजर में लेके रोज पानी देते हैं। पंजाब में सर्दी में इस दफा तो हुई नहीं, बदकिस्मती है, लेकिन कोहरा पड़ता है। अमृतसर की टेम्परेचर इज द लोएस्ट इन इंडिया, यू कैन रीड एनी ईयर। 0 पे आता है, कोहरा भी पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ती है, तो वो मर जाते हैं। तो उनको वो कक कान वो जो होते हैं ना घास वास का, उनको रजाई बना के देते हैं, कवरिंग, एंड इफ इट डाइज ही विल रिप्लेस इट। तो मैंने कहा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो करती नहीं, पंजाब गवर्नमेंट नहीं करती, एग्रीकल्चर नहीं करती, PWD नहीं करती। PWD का धर्म तो है जितना सीमेंट डालें और उसमें अच्छा रहता है उनके लिए भी, तो देश के लिए भी ठीक है ना। तो पेड़ तो कोई लगाता नहीं, पेड़ के दुश्मन है। तो मैंने कहा ये बड़ा अजीब बाबा है कि ये पेड़ ही पेड़ लगाए जा रहे हैं और जैसे बच्चे पाल रहे हैं, सारा दिन ये लोग घूमते रहते हैं अपना वाटर बाउजर लेके। मुझे हैरानी हुई सच्ची बात। सो उस चीज को मैंने पकड़ा और वहीं नहीं लगाए, तरन तारण के आसपास ही नहीं। गंगानगर में वहां भी वो लोग हैं पंजाब के भी सेटल हुए हैं या खेती करते हैं, वहां भी इन्होंने लगाए। ग्वालियर से मेरा भी संबंध है, शिवपुरी में कुछ जमीन है, 50-60 साल से जंगल हम लोगों ने साफ किया था, पिताजी ने और उनके भाइयों ने, मैंने भी किया था। और ग्वालियर में इनका है, तो ग्वालियर शहर में भी इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, वहां भी स्कूलों का कुछ करते हैं। तो सच्ची बात इस चीज से मुझे हुआ कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में बहुत कम है। बाबा आमटे का सुना करते थे, कोई इक्का दुक्का और सुनते हैं, बाकी तो हर एक मैं सबको मत्था टेकता हूँ, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, उसमें बड़े बड़े वो उनका गौरव अपना हो जाता है, जो महापुरुष वहाँ बैठे होते हैं, तो लोग आके मत्था टेके जाते हैं। भाई अगर कोई धर्म है, अगर कोई भगवान है, अगर कोई स्वर्ग है, तो वो तो सेवा ही है, दूसरे की सेवा, और तो कुछ नहीं है। जितना मर्जी पाठ करते रहो आप, गीता का कर लो, ग्रंथ साहब का कर लो, इसका कर लो, उसका कर लो, रेपिटेशन इज नॉट गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन। यस, इट डज हेल्प, it does help because you think, I hope, of what you read and what you repeat. What does it say? So that is important, and that is why I have associated myself, and I am very, very pleased personally that he has been recognized. But he doesn't need Government of India recognition. Recognition is of the people, anybody else, not just him.
Recognition is of the people. And the people know in Amritsar, and they know in Gwalior, and they know in Ganganagar, and lots of other places he keeps on going. And they know that here is somebody who just comes and does something for us. इनको तो कुछ नहीं मिलना है. जैसे कमलजीत ने कहा बैंस ने कि जी वो दाल फुल्का खाते हैं, एक चारपाई है, वो सो गए, और क्या है. I think that is why I am here. And I am delighted. And मैं हंस रहा था चौहान जी को, मैंने कहा अब बाबा जी को तो हमने यहाँ प्रोफेसर बना दिया, ही विल कीप कमिंग. आप लोग वॉर्टन वालों को बुला के MBA के बथेरे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ. Well, you listen to all these gurus from a certain class. Now I am of that class also, but I am of some other class of India also. And Mr. Chauhan was saying, and I could see, he gave you a lot of very clever lessons in management, in being a leader, in being a human being. He said something very interesting to me, and I also feel that passionately. One is learning. There are lots of IITs now, there are universities like yours, outstanding schools, and whether you take this technology or that science or that engineering, all of you will learn it up thoroughly and you will know the theory, and then the next you will go. I have already been told that lots of people come here and take you away for very good starts in life. We never had that kind of thing, but you have it and you deserve it. But he said there is another side to it. If you only look to that and look for your next grade and you leave this company and go to that company and go to America, then yes, you will get very rich, you will have one Mercedes or two or 10, but you will be a sterile human being. That's my word. It won't get you anywhere. वो टॉल्स्टॉय आप लिटरेचर अगर पढ़ते हैं, all students in technology of every kind, चौहान साहब, I hope they read literature, चाहे मुंशी प्रेमचंद चाहे पढ़ें, चाहे टॉल्स्टॉय पढ़ें, चाहे अरुंधति पढ़ें, चाहे इसको चाहे उसको, because literature gives you about life and about a larger things. And if you talk of Tolstoy's story, how much land does a man need? आखिर में तो 2 गज ही चाहिए, और हम लोगों को 2 भी नहीं चाहिए, आग लगाते हैं और ऊपर गया, क्योंकि 95% तो पानी है, तो वो तो 1 मिनट में मॉनसून क्लाउड बन जाता है, और थोड़ा सा ये सॉल्ट वॉल्ट हैं वो इधर उधर गए सॉइल में, तो बात खत्म हो गई, और तो कुछ नहीं है. बाकी तो भरम ही है आपको कि हम बहुत हैं. I am chairman of this company, that company, I read about all of them, I am billionaire, and how much can you eat and how much can you drink and how many clothes? I have gone through it. Frankly, the human greed for personal something wears out very quickly. और हीर में मैं बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्री के, मैं इंडिया का इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी 4 साल रहा हूँ, सो मैं सबको जानता हूँ, खेती वाले भी इधर के उधर के, और बड़े बड़े सेठ, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो हिंदुस्तान के हैं, और हम उनको मानते हैं, उनकी सेवा को मानते हैं, लेकिन वो सच्ची बात है, कुज्जे का दही खा के ही रात गुजारते हैं. ये तो गरीब को ही नींद आती है सूखी रोटी खा के, ठीक है ना. तो what, I mean, how much can you earn and what can you do with it? That tip over point is reached very quickly in life. It is other values, what he was saying. It is other things. And if you have an interest outside yourself, everybody can do this, very few can do that. Giving outwards, whatever you give, whatever you have the capacity to give. And I think that is important. And I hope Mr. Chauhan, I know how much focused he is on it, कि आप जितना मर्जी यहाँ पे पढ़ जाएं, जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृति मत भूलें. और संस्कृति, I mean culture in the broadest term, not this religion, not that religion. Because remember, the country you're in and the country you're going to lead for the next 50 years, I think I won't be around. 50 years को ज़्यादा है, but the country you're going to have to deal with. It was 30 crores at independence, it's 102 now. That's one of our failures of my generation. Ministers, politicians, prime ministers and IAS and everybody. That is there. And that is also leading to something else. I am interested in फॉरेस्ट. अभी मैं सरिस्का से उधर से आया हूँ, रणथंभौर, इधर उधर शिवपुरी में इतने टाइगर थे जब मैं था स्टूडेंट, अब एक नहीं है. टाइगर्स वर डिफिकल्ट टू अवॉइड, सारे घूमते थे, हमारे खेतों में घूमते थे.
panther, ye wo. Why? Because 30 have become 102. The pressure on land, the pressure on forest, no matter what we do, Jairam, Ramesh or any one of us, we keep trying, whoever is in responsible position. But frankly, it is simply the pressure of population. तो पॉपुलेशन है तो जंगल नहीं रहेगा, जो मर्जी कर लो. मैं अभी देख के आया हूँ, खूब 2 घंटे घूमा मैं सरिस्का में, कई दफ़ा गया हूँ. लोगों ने रोटी भी पकानी है, लकड़ी भी चाहिए. क्या करेंगे? मजबूरी से करेंगे तो करेंगे. आप रोको तो रोक लो, नहीं रोक सकेंगे. और जंगल नहीं रहेगा तो शेर नहीं रहेगा, हिरण नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा. और जंगल नहीं होगा तो पानी भी नहीं होगा. आई एम इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑल्सो. किसान तो हुई. I am the only agriculture secretary they've ever had or will have, I like to say, who can plow, listen to me, who can plow a straight furrow. I said a CEC, I showed it to them in a famous picture that was taken in Shivpuri. Who can plow an acre in the morning, I still can, and I'll do it straight. So it is as simple as that. The pressure, the forest is dwindling no matter what each one is trying. The water cannot be there. The river cannot survive without forest. I am a mountaineer, trained by Tenzing, by my own desires and wishes. And I have spent time and a lifetime. I have written a book on this, high mountains and area. And I know what has happened to the Himalayas from east to west. I keep going even now. I know what has happened to Shivpuri, where there were forest and unlimited tigers. Now there are stony hills and there is no tiger. There is nothing. A few deer, manji, in a game park they have next to my farm. And therefore this is the question. Jo keh rahe the, Pavan Guru, Pani Pita, Mata Tartamat. It is, I believe, the greatest stanza for saving the environment. तीनों चीज हैं, हवा, पानी और जमीन. माता है, पिता है, गुरु है, तीनों. इनके बगैर तो नहीं होगा. That's what he's saying. And therefore people, all of you have to think of this, not just of your degree and this salary you're going to get. You got to get linked to India. I always say all sorts of things. I said Commonwealth Games, or let's have the World Games. I say, but remember, I play a bit of golf. Noida golf course, go 10 miles this way or go 10 miles on the other side of Delhi. What do you find? You find the Rohtak villages or the UP villages, in what level they are. And I hope you have eyes always to see, no matter how rich you get, how big a chairman or managing director you become. That is important, because you got to have compassionate eyes to see us, the real India. We talk of growth, 9% now, will be 10, will be 12. Yes, it will be. But frankly, I do say, with whatever little knowledge I have, and we say we are going to be the world power in this century. This century belongs to us. China also, we don't like to mention China, but chalo, hamare liye to hai. But I can assure you, 65%, 70% people are on the land and in the kind of distress, as Arjun Sen Gupta keeps writing, 70, 77% having less than 20 rupees a day to live on. And you can go anywhere in India. If you open your eyes, you see it all. My dear friends, we are not going to march into any century as leaders unless we carry everybody. Not just 10 of us out of 100 or 20 of us. We will have to find ways, all of you, and policies in which you carry everybody. Unka bandobast karna hoga. And you see all the tensions of India. You see what has happened in this last week. And these things will keep coming. Because all of us have to move forward together. And we have to have a method. And that is what you people have to think about on a larger plane. And also, remember one thing. This is a subcontinent as a country. Very large. It is what Naipaul calls, or it is a quilt of many colors. कितने धर्म हैं, कितने कास्ट हैं, जो मर्जी करते रहो, कितने हाई एंड लो हैं, कितने गरीब और अमीर हैं. We've got 100 divisions. And we are successfully, and that is what amazed people, because they thought after 47 there will be problems.
To the east and west of us, people have had problems and they continue to have. But thank God we don't have in that sense. Where we have a problem, we are able to deal with it. Because one, we remain a democracy. And the parliament is only what I called often a listening panchayat. I hope it remains a listening panchayat. कि हर एक की सुननी होगी. I have been a chief election commissioner, I have been a bureaucrat, but I see the other side of angles. We have a 0 hour in parliament which is not known to the British parliament or any other parliament. हालांकि वो मॉडल ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर ही एज वी से वी हैव. भाई 0 आवर क्या होता है? वो हरनाकश को मारा था, ना संध्या शाम थी ना सुबह थी. वो क्या है ना, आपको पता है सर, है यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि हरनाकुश को उसने कहा था, उसने लिया हुआ था, वर लिया हुआ था कि यू कांट बी किल्ड इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, इट हैज टू बी समथिंग एल्स. तो उसको मारा था, वो सरदल के ऊपर था. है चौहान जी, आप डिटेल में जानते हैं, ये भी कुछ जानते ही होंगे, नहीं है तो दे बेटर लर्न दिस. है तो that is where we are stuck. We have to have a policy. Parliament has a 0 hour. 0 hour after question hour, before we go into a debate, suddenly 5 chaps start screaming in the Rajya Sabha where I sit or Lok Sabha where I go. And a lot of people, your class, my class outside in the drawing room, evening dinner will say, ye kya hai? They should be removed. I don't, surprisingly, though I am of your class, but I think other way. No. Somebody is screaming to say त्रिपुरा में या फलां जगह ये हो गया है, या एक लड़की से या लड़के से या आदमी से गरीब से जुल्म हुआ है. And he goes on screaming till the vice president says अच्छा भाई सुनते हैं, and government says all right, we'll look into it and make a statement. In other words, we are a listening parliament still, and therefore any tension, any problem in a billion people, there will be a million problems. Every day दुख बहुत होंगे, because we are दुख तो होने ही है, particularly in our kind of country with all the economic and other social problems. तो सुनते हैं, and that helps. That helps. There are always decisions, there are generally by consensus, by collective. अगर आज हमने opposition से या किसी से बात नहीं करी, तो 2 दिन के बाद हम सोच के correct करके उनको कहते हैं यार बैठो बात करते हैं. And then slowly we come to something which is a solution. That is India's way. It is not anybody else's way. We see terrorism, if there is a problem, world is having it, we also are having it. But it's an amazing thing. And the Americans are surprised. कि भाई इनके जो भी हो, but people are stable and calm no matter what the tragedy of the day. Elsewhere it leads to bigger problems. Not with us. Because I think the Indian people have inherent wisdom, which is of their culture, not of metric and +2 and this and that. That's of the culture. If you don't give it up. तो हम सोचते हैं. और उसके साथ ये भी बड़ी बेसिक चीज़ है कि सर्वधर्मा की जो हम बातें करते हैं, सेकुलरिज्म कह लो, कुछ कह लो, but frankly all of us have to exist together. Either we hang together or we hang separately, as they say in English. That is the truth of the matter. That is the only way to govern a billion people. Whether this party or that party, I have seen them all do it, and I respect the way ultimately the top leaders of anybody, they think and try to correct. गलती होती है, हो गई भाई, then they try to correct. नई बात करिए, balance करो. And I think that is a very fundamental thing which all of you better retain for your future. Any petty thought in any direction, whichever one it might be, is not going to lead you or the country anywhere, I can assure you. It is for your survival that you have to think of it. That's the way I take it. Not as a charity to someone else. Because that is the only way we can run it, and the world admires us. I say to the American ambassadors or the European ambassadors, I said, you have set up a common market of 25 countries. We are a common market. We show you how we work. There is so little in common between Tripura and Kerala and Punjab. बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, मौसम डिफरेंट है, पगड़ी एक की है कि नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है. But we have a commonality, and we understand that in our soul, psyche. है? And therefore we
When we sit in the Rajya Sabha, I find it amazing that everybody is brother of everybody. Otherwise, Arunachal and me or somebody else, but हमारे रिश्ते हैं हर किस्म के हैं. And that goes across the whole lot of the 800 MPs. I want to say this. It is a mental attitude which somehow grows into them from somewhere. And we should not lose it. And while your university is great, and you, I have no doubt you have outstanding results, you will have more outstanding, you will go to great jobs, but you must keep this in mind that we don't want you a very learned man, we want you a very good human being. That's my way of looking at it. That is important, and that is what will show as you go along. Lots of people get the sword of honor in the military academy. They never end up as army chiefs or even generals, because competitive excellence is simply one element and a very petty element. The larger quality shows as you go along. And NSS की आपने बात करी थी. I find that in my current job a very valuable organization started 40-50 years ago. From all over India, students are there. They do a lot of work, and we try to help them within our resources. And I am very happy if you are going to have NSS in all your campuses. And I will certainly do that, because I welcome that. The Commonwealth Games are there. They are going to have 30-40,000 volunteers. I have told them that you must have NSS, you must have NCC, you must have, I have incidentally checked and I've been told by Dr. Chauhan, there are a lot of students from the Northeast here doing various degrees. I'm very happy about that, because I am a great admirer of the hill people and the tribal people. Seedhi baat. We come after that, whether you're this province or that province around about here. It is the hill people and the tribal people who are to me the finest in India. Perhaps in the world. They get something from the mountains or the forest of a broader culture and of a decency and of a openness. That's the way I think anyway. And I have been asking, I want to make sure that these boys and girls who are in Delhi, and sometimes they get badly treated because we've lost our culture. Otherwise there is no reason. You know what I'm saying. And I want to make sure that they are going to be volunteers in those games. I'm going to try and do that. And finally, one thing, okay, all this learning is all right, but a little bit of adventure in your life you must have. Otherwise you will be what they say in English, a dull dog. That is the phrase, a dull dog. English phrase. So I hope each of you has some interest in something. When you get older, as you also will, as I am, so then your youth will be preserved by something, some interest. Like I asked, and I am the first and last IAS officer to go to Darjeeling and train with Tenzing. It remains my most precious memory. He became a friend later, and I know all of them, and I am involved even now with them. The Himalayan Mountaineering Foundation Nehru had set up. I was its president for long years, president of the Himalayan Club of 1928. And I passionately work with them to give youngsters a chance to go to the Himalaya, to go to the desert, to go in these kind of things. And now that I'm a minister, I'm doing it very much in the ministry because I know this business. And I'm sending thousands of kids to go on a holiday. I can't afford it. Most of you can't. How can you? Oh, थर्ड रेट कमरा होगा तो 3-4 हज़ार रात का होगा एक आदमी का, खाने का लगा के हम दे नहीं सकते हैं. So I am doing that. कि भाई boys and girls 15 and half girls, half boys in my total sharing of things. So they will go on 15-day trek to all from Ladakh to Sikkim. Mountaineering school है 6, 7, 10 वहाँ हम भेजते हैं. They trek up to about 14,000 feet. That's high enough. The highest in Europe is 14,000. और हमारे तो passes हैं, रोहतांग है, ये है, वो है. And they'll go there. You will trek, you will camp, you will bond, you will learn leadership, you will learn a bit of hardship, and you will see India. And I am sending them to the desert safari also, and South India also, over the Sahyadri mountains right down to Kerala. That's one. But there are so many to do. And I hope you people are not just learning people or that's all they are going to tell you. No.
Something to do outdoors, something to do sports, walking, adventure, river rafting, anything. अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या करोगे आप जिंदगी में? बोर हो जाओगे, टीवी देखे जाओगे, और जब वो इतने चिप्स खा लोगे कि फिर ऐसे हो जाओगे. By the time you are 40, you will be a pot-bellied successful manager. And that's all you will be. And the ladies, of course, once they are married, they really don't worry. And वो तो double chips खाएंगी तो और ही मौजा होंगी. I hope you don't do that. I hope you don't do that. So I wish you well. Take pride in yourself, in your fitness, in becoming a complete human being, not just a gotebaz PhD of a very high quality. Thank you.